Yes, sir. What is your name My name is Somis Rana Bijuli. and your roll number for this exam? My roll number is 401041. Please give us a formal introduction. Uh, Nowadays I live in Cuttack, but I was born and raised in scheduled areas of Odisha, Kandhamal and Keonjhar. After graduating in mechanical engineering, I got an opportunity to work and research at IIT Gandhinagar through GATE 2016 exam. Along with my studies and research work, I had also volunteered for the Art of Living Foundation for its social service project at grassroots levels from Gujarat's Anand district to Odisha's Anandpur. And lastly, for the past couple of years, I have been into the preparation for the forest and civil services of Odisha. You also HSC, Saptaswai High School, Pulwani. Yes, sir. Why you got to Pulwani? Sir, I was born and raised in Fulbani for nearly 10. I lived in there actually for 20 years. You to Nayagarh College. Sir, I can't hear actually, it's raining. From Pulwani to Nayagarh. Yes, sir. Nayagarh, I was partly there for the coaching purposes, but my family was in Fulbani. So class to boy, you are mechanical engineer. Yes, sir. Then why did you want to learn forest service? Yes, sir. Why? Yes, sir. Sir, I have lived for more than 20 years in scheduled or tribal areas of Odisha, and I have the experience of forest, both the forest and forest dwellers for more than 20 years. And I want to take this experience to the forest service, because forest service alone cannot conserve the entire forestry sector of the Odisha. And my experience, with my experience, I want to strengthen this symbiotic relationship between the forest and the forest dwellers in a holistic manner, and bring sustainability with forest management. This will be beneficial both for national and global interest. The mechanical engineering, how will it help you? Yes, sir. What you study? Yes, sir. Sir, in my BTech project, it was related to the environment. The environment waste like the plant fiber, the wood dust, and the biomass which is generated in the forest. I use those biomass for a material construction, just for like this table and this wall construction. I use that, and in my mechanical knowledge will be helpful in the forestry sector tools, devices. If there is any misconnection in the forest harvesting tools, I will not wait for another person or another mechanic to repair that. I will immediately do that. And my knowledge of in heat and thermodynamics will be helpful in definitely in the forest fire. You have this optional subject, forestry optional subject. Yes, sir. Forestry and agriculture. But you are a mechanical engineer, na? Yes, sir. Then Though, why you are taking forestry subject? yes, sir. PhD. Sir, What is forester? You Sir. know from your forester? sir. Forestry is very good. हाँ sir. What is forest? What is forest? Sir, forest mostly includes the trees, herbs, shrubs. That includes what is basic. What is forest? What is definition of forest? The layman is jungle to come to. Sir, forest is a natural resource which gives us the life to breathe and to sustain our livelihood. And forest, These are the benefits of forest. Kौन down? Forest how common is? sir, for the basic definition purpose, I am not able to recall that definition. As simple ଜାଣିବେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଉଡ଼ି ଭେଜିଟେସନ ଥିବ ଗଛ ଥିବ ଜନ୍ତୁ ଥିବ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ କରିଦିଅ କ'ଣ ଭେରି Sorry, sir, I could not manage to frame some. ସିମ୍ପଲ ଜଙ୍ଗଲ ମାନେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଙ୍ଗଲ ଫରେଷ୍ଟ ଆସୁ ଫରେଷ୍ଟ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆଉଟସାଇଡ୍ କମ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ବଟ୍ ଗୋଟେ ଲେମନ୍ ଗଛ ବୁଛ ଜନ୍ତୁ ଫନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ କ'ଣ Okay, sir. I will remember that. Flora and fauna. Sorry, ma'am. Flora and fauna. Flora and fauna. Yes. Natural resources with flora and fauna. Okay. I will remember that. what is wildlife So wildlife are it's a fauna part, and it is associated with the forest. is wonderful you have to wildlife definition all
कल्टिवेटेड फ्लोरा एंड फॉना वाइल्ड लाइफ रे गछ भी मिसी छी वाइल्ड लाइफ अपने खाली जंतु ओके सर वाइल्ड लाइफ फिजिकल जो अनकल्टिवेटेड फ्लोरा एंड फॉना फ्लोरा ताମାନେ जोड़ा जंगल रे पड़ुची माने देखे मनुष्य सा बिना साइज पड़ुची ओके तो सर वाइल्ड लाइफ फॉर एग्जांपल ଗୋଟେ ଶାଳ ଟଗର ଗଛ ବା ଶାଳ ଗଛ Yes, sir. ତମେ ଲଗେଇବ ତମ ଘରେ ଜାଣି ନଟ ୱାଇଲ୍ଡ କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ୱାଇଲ୍ଡ କିନ୍ତୁ Okay, sir. ଶାଳଟାକୁ ନିଶବ୍ଦ କରାଯାଇଛି କି ଯୋଉଠି ରଜା ହାତୀ ବନସ୍ଥଳୀରେ ରଜାଙ୍କର ତେଣୁ ଶାଳଟା ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର Okay, ଅନଲେସ୍ ଅଦର ଇକୁ ହେଲା Yes. ଅନ୍ କଲ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫନା all cultivated ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଫନା ହେଉଛି ଜନ୍ତୁ yes sir ମାଇକ୍ରୋ ଯେମିତି କେଞ୍ଚୁଆ ଜିଆଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ big trees ଏବେ ଛୋଟ ବୃଣ ପ୍ରକାର କରି ବଡ଼ ଗଛ ସବୁ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ okay sir ହେଲା वाइल्ड एनिमल वाइल्ड एनिमल प्लांट्स एंड animal एनिमल को sir animals रे sir in animals from microorganism to big protected animals are included like tiger and elephant and all पूरा कोई ऑप्शन वाइल्ड लाइफ कोई ऑप्शन फर्स्ट sir कोई जगह रखा है sir these are protected in situ and ex situ conservation in situ conservation भितरकनिका national park सातकोशिया सिमिलपाल टाइप where do you find wild animals in the wildlife act wildlife animals sir in reserved forests in the wildlife act in which section where wildlife act कोई एनिमल रखा है wildlife आगे आगे तो yes sir एनिमल को कैसे कोस chapter and sections रे वाइल्डलाइफ एक्ट कोई जगह एनिमल रखा है तो बागवाड़ा वाइल्डलाइफ को कैसे sir core area of the reserve forest वाइल्डलाइफ एक्ट तो जंगल वाइल्डलाइफ एक्ट 5 शेड्यूल्स yes sir वन शेड्यूल 1 2 3 Yes, 4 5 yes, sir. वर्मी तार भीतर से আছে okay sir होला और व्हाट इज वर्मी sir vermin is the decomposed of the forest वर्मी का जो शेड्यूल नहीं जरा okay जरा शेड्यूल के नाती कुकुशाली yes sir बिलवा एगुला होजी वर्मी तो एरा तो मानले सिचुएशन दे आर नॉट शेड्यूल एनिमल considered वाइल्डलाइफ एक्ट रे आदमी सब जेते एनिमल अछि जोटिबे ताको शेड्यूल कराय yes sir शेड्यूल वन होजी बिग गेम जो आर एक्सटिंक्ट हे गलेनी बा बहुत जगह एक्सटिंक्शन जाऊ छथि ये पछे एक्सटिंक्ट कोन हे छथि एक्सटिंक्ट कोन हे छथि dinosaurs बहुत जाऊ छथि एक्सटिंक्ट होआ पे sir great Indian bustard a bird in found in sir great Indian bustard and sir I am not able আরে to vulture yes sir eagles vulture আগুনা সংখ্যা ছিল মাটিয়া ছিল yes sir বিরাট আস্তে আস্তে near x ভলচর মোস্টলি ভলচর মত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে মানে যাচ্ছে নষ্ট হয়ে তো তো ভলচর বসাই গেল ওয়াইল্ড লাইফ ফ্যাক্টর ক্ষেত্রে আটটা ফার্স্ট sir first the forest act 1927 wildlife conservation act forest said ওয়াইল্ড কনজারভেশন আর wildlife protection ওয়াইল্ড প্রোটেকশন আর wildlife ফরেস্ট কনজারভেশন আর forest conservation act 1980 wildlife protection act 1972 and forest rights act for the SC/ST community 2006 তারপরে অন্য sir national green tribunal what are the related acts what are the কোন কোন আছে related acts sir national forest policy 19 not act it's not a act it's a pollution আছে pollution air act and sir other acts are there তো তোমরা কুকিং ভালো শিখলো सर किछिटा ओडिया पर्टिकुलर डिशेस जानछि जोटा कि मु ट्राई करे गुजरात आ यूएस रे मध्य से जोड़ा बहुत ही फेमस যোগ করছো यस सर কোন করতে যোগ सर मो आर्ट ऑफ लिविंग रो सुदर्शन क्रिया और पद्म साधना रेगुलरली करे लास्ट 7 इयर्स ভেজ আর নন ভেজ सर मु नॉन वेजिटेरियन কিন্তু সুদর্শনে আটা বিমান তো ভেজ নন ভেজ यस सर बट सर गुरुजी माने कहबा वाइज जे सेमती कोनसी वेज और नॉन वेज रे रेस्ट्रिक्शन नहीं इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस আর ওয়াচিং यस सर I tell you I do give us to watch Sir, I have not been properly trained in a formal bird watching,
It's very informal. Before I was introduced to this by Panchami Manu Ukil of Bhubaneswar. She is a very famous bird watcher of Bhubaneswar. We had a very big guava tree in our government quarter at Fulbani. So many parakeets used to visit there. So I started from there because I love parakeets. You know this Chilka? Chilika, yes sir. Why is Chilka famous? Sir, Chilika is mostly famous for the migratory birds. Number one is Ramsar side. Ramsar side. Number two, It's a Chilka sanctuary. sanctuary. There is Nalabona. Yes, sir. Number migratory ducks. Yes sir. Migratory ducks कौन? बहुत लोगों को धारणा है कि migratory duck का असली स्वरूप है जाने. What is migration? Sir, migration is birds come to this particular place to escape the chilling winter from their habitat. Migration is having exodus from their resting place to the feeding place. Yes, sir. Right back, vice versa. Yes sir. It occurs in each year in alternate direction. You got to achieve it. Then it comes down to our higher everybody, everything is then they come for food. The high salary, they have changed to breed, again they go back. So I Yes. found that acid. So this is migration. Migration from class is order of action. Okay sir. But that can be very good. Now, Yes. Simla is never a national park. Logo is national park. It proposed national park. Proposed national National park. park और जो यहाँ पर किसी मक्खी होता है Yes, sir. ये तो नहीं national park. National park. What is carbon sequestration? Carbon sequestration. Sorry sir, I am not able to recall. अरे इस capture जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेशर को रखने को कार्बन Sequestration. और ये तो रखियो ना जी अपने Forest. जंगल Yes, sir. जंगल समुद्र पानी रॉक these are Sing. sing माने where this carbon dioxide as chlorine. Yes sir. So what is chlorofluorocarbon? Sir, chlorofluorocarbon is a greenhouse gas. It is generally emitted from the electronic devices. So what is global warming? Sir, global warming is the phenomenon where the temperature of the globe increases for a considerable period of time, just like pre-industrial, industrial level. So this is global warming, and there are several factors for the global warming. First one would be the anthropogenic factors, the human-made uses like the vehicles, electric appliances which we use. It emits a substantial amount of greenhouse gases, and there are also natural causes like volcanic eruptions. Okay, you're Somesh? Yes, Your ma'am. title? Rana Bijuli. Rana? Rana Bijuli. Okay. So you were brought up in Fulbani. Yes, ma'am. Native place? Native place Khordha. Fulbani. Why do you think you are perfect for this forest job? Yes, ma'am. Ma'am, I have lived for more than 20 years in heavy forest covered scheduled areas of Odisha, and I have also the experience of both the forest and the forest dwellers for more than 2 decades of my life. And with this experience, I want to strengthen the symbiotic relationship between the forest. Why do you think you are perfect for it? Ma'am, I think I am the perfect because I have the perfect experience at the ground level. Because I have seen when the government policies and the Just tell me what quality is that of yours? Ma'am, I can convince the forest dwellers because I will not go to them as their benefactor. I will go to them as their like a friend. The second one will be I will always try to focus on the women empowerment, because in the tribal women, if you encourage them, they will start anything because they are very enthusiastic to learn. The men folk will also do, but when the women start, men folk will definitely follow them. So I have the capacity to capture and tap this potential of the women section among the tribals. Okay. Suppose that some political issues arises and they don't let you do that work. Yes, ma'am. In that case, how you will deal with the situation? Ma'am, I don't think in every situation there will be political interference in my work. I'm saying if there is that. They will not allow me to do that. Ma'am, I think there are other aspects of my work that I will focus on that.
because for one particular job I can't let the responsibility which are imposed by the constitution and the state government acts, I will not let down. I will focus on other aspects of the act. It is definitely one of my strength point, but at the same time there are also other sectors which I will try to focus on. सर मत लगुच यहाँ आमर लॉ मिनिस्टर रेजिग्नेशन पार्लियामेंट रे जो असेंबली रे जोटा लॉ मिनिस्टर जो महांगा डबल मर्डर केस रे दी दिन है असेंबली 2-3 दिन है असेंबली रो क्वेश्चन आवर को से माने फंक्शन करे दो नथिल अपोजिशन पार्टी मत लगुच सेटा आउ गोटे इश्यू जोटा कि बहुत ही न्यूज रही जोटा भितरकनिका गोटे वाटर प्रोजेक्ट होची जोटा कि भद्रक पाई पानी नहीं जावाई भावुँ खरस्रोता रिवर रू सेटा बहुत ही इश्यू अच्छी कारण स्टेट यस सर इन माय ओपिनियन जो स्टडीटा आईआईटी हैदराबाद रो जने प्रोफेसर को द्वारा तार कौन सब्सटेंशियल रिपोर्ट एपर्यंत ना कारण निजे प्रोफेसर ईमेल रे कहते जो मुझे भी रिपोर्ट आपरे करिनी किंतु स्टेट गवर्नमेंट क्लेम करुँचे रिपोर्ट करिसेंती सो मो मतरे इंडिपेंडेंट जुडिशियल मेंबर्स मानक नहीं गोटे पैनल तैयारी करा जाऊ जो थी कि इनिशियली जोटा स्टार्टिंग जब भी ये प्रोजेक्टर प्रकल्पर इनिशियली स्टार्टिंग होता कनसेप्टा से ही दिन वर्तमान पर्यंत जहाँ सर मो पर्सनल व्यू डिपेंड करे डाटा उपरे बिकज केते अमाउंट बिकज ऑलरेडी से जगह इंडस्ट्रियल एरियाज भी अच्छी जो मैंने से खरस्रोता रिवर रू पानी नहीं जाऊँच तो जी पानी आ बाकी रोचे केते अमाउंट रो पानी से माने भद्रक को पठेबे आ रेस्ट केते पानी सेठी रहइबो कारण सर सेटा गोटे बहुत ही क्रिटिकल एरिया हाँ सर पानी थाए से जो पर्टिकुलर यस हाँ सर एया नष्ट हम जो खरस्रोता आउ माने जो ब्राह्मणी नदीर पानीटा समुद्र पानी संगे मिसवा द्वारा से जगह लुणी अंशटा कमी जाऊँगी जोटा कि ब्राकिश वाटर है मैंग्रोव आउ आमर क्रोकोडाइल मानक रही सेटा आइडियल कंडीशन होची जदि आमर फ्रेश वाटर पानी नदी कमीज सेठी सी वाटर लुणिया हो से पानीटा हेले से हैबिटाटा धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो हाँ सर हाँ खसीज सर समुद्र पानीटा पशिब पुणी बाहरी जीव हाँ सर 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 मुझे सर दे नीड अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ saline and fresh water. This is what I have read. हाँ सर कौन सी भी एपर्यंत सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं सेटा ही मु कहूली जे से माने आईआईटी हैदराबाद रो जो प्रोफेसर को कही जो माने एक्टिविस्ट माने ईमेल करिसेंती से निजे तांको ईमेल लिखिछन जे मु कौन सी भी रिपोर्ट आपरे सबमिट करी सर बुझी पारे जो मैंने सर सेटल दैट प्रॉब्लम जदि मुझे एरिया रे टोटली माने यही डिपार्टमेंट टोटली न्यू थी यही काम उपरे ताले मु पूरा स्टार्टिंग रू स्टडी करी जेबे ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता तार कौन कौन लेटेस्ट डेवलपमेंट है यहीटा मु को पाथ फॉलो करी सर जोटा महानदी ट्रिब्यूनल जोटा ए फॉलो करुचे महानदी आउ नदी उपर छत्तीसगढ़ आ ओडिशार जो सब डिस्प्यूट्स चली ट्रिब्यूनल बहुत दिन है डिसीजन्स दे पारनी कारण सेंट्रल वाटर कमिशन रू रिपोर्ट्स क्लीयरली आसी नथिला आम पाखक केते अमाउंट पानी छत्तीसगढ़ आमको छाड़ुची केते अमाउंट पानी सेटा महानदी रे थ्रू आउट द ईयर फ्लो होची सब डाटाज कलेक्शन कला परे मु जाइकी किछि डिसीजन नहीं पारिबी एंड कॉन्टेक्स्ट उपरे भी डिपेंड करबा सर सेटा पॉलिटिकल इश्यू मध्य हे गलानी एबे भी सो
दीटा जाक फैक्टर को कंसीडर करके कौन थिला प्रोजेक्ट तमरा बीटेक मैम मोर बीटेक प्रोजेक्ट थिला जंगल सब जो काठ गछ कटा होची वेस्ट जेनरेट काठ जो करत गुंड गुड़ा बाहर से गुड़ा को आणिक आम गोटे केमिकल पॉलीमर सांगे मिसई देला परे सेटा गोटे मटेरियल कंस्ट्रक्ट हो जाए से मटेरियल मैडम जदि खाली आपण अठारे तैयारी करेंगे से जो केमिकल रे तार गोटे प्रॉपर्टी न थाए किंतु जदि आपण नेचुरल जिनस मिसेबे तार गोटे थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी आसी जे जो कि सपोज बाहर आपणकर 40 डिग्री टेम्परेचर रहा आपण घर कांथटा को सही मटेरियल तैयारी करदेले सेटा भितरटा निहाती 30 टू लेस डिग्रीज पळे आसीबो सेथिपई एटा को हमर कंपोजिट मटेरियल कहती सेटा हमर एयरक्राफ्ट रे रेलवेज कोचेस रे भी यूज करते मैडम मोर जोटा आईआईटी गांधीनगर रे रिसर्च थिला सेटा मध्ये एनवायरनमेंट रिलेटेड थिला आखु चोपा रस बाहर सारा पर तार जो आखु नष्ट हो जाउची किंबा जंगल रो सब जो परिबा चोपा गछ पत्रर चोपा गुड़ा ताकू नेकी आमे गोटे फ्यूल तैयारी करते मिथानॉल इथानॉल बायोफ्यूल्स मैडम आमे सेही बायोफ्यूल्स को यूज करथुलो सबमरीन रे सबमरीनटा जिते पानी भितर चले ताकू इलेक्ट्रिसिटी निहाती दरकार बर्तमान इंडिया रे जो टेक्नोलोजी अच्छी से कौन करती ना से डीजेल इंजिनटा चलो केतबेले जितेबाला सेटा पानी सरफेस ऊपर को आसीबो आसिले से एयर सफिशिएंट टाणिकी इंजिनटा चलो किंतु जितेबाला आपण पाकिस्तान एरिया पाखापाखि एनिमी जोन रे थिबे आपण से टाइम रे रिस्क नहीं पारिबे जे ऊपर को आसीबे कारण ऊपर को आसिला माने जो एग्जॉस्ट बाहरिबो सेटा गरम हो जाए पानी और एनिमी डिटेक्ट करेनी तो आमे मैम जदि बायोफ्यूल को पानी भितर यूज करबा फ्यूल सेल थ्रू रे तो सेटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करि परिबो आ स्ट्रेटेजिक पर्पस रे बहुत यूज होई परिबो अरे गोटे मिनट हम मेकानिकल ना यस सर हमर तो फर्स्ट इंजीनियरिंग अछि यस सर हां सर तो समुदाय को ब्लू जो वीडियो करियो पार्टिकल को ब्लू वीडियो हां सर इंस्ट्रक्शन कर और सर्विस है तो इंप्रेशन इंजीनियर अछि यस सर और इंप्रेशन वीडियो हां लाइक दिल्ली गुना यस सर ब्लू यस सर ब्लू सर यार केमती यूटिलाइजेशन करिबो मेकन यस सर सर आमर गोटे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट थिला जो थी कि इन्वेंटोरी को केमती मैनेज करके ठीक भाव में यूज कर परिबो सही जिनसटा आई थिंक यूटिलाइज हो परिबो एई सक यस सर यस सर मु आउटे रिसर्च करके आ ऊपर पढ़ेबे मोर 14 सेप्टेम्बर लास्ट दिन सर मोर कहीं कांटेक्ट रे नहांती मु सांग को थ्रू रे ही कांटेक्ट करथि सर खाली कहते जे बेसिक ऊपर स्ट्रांग कर लिंक कर निज पर्सनालिटी को फॉरेस्ट सर्विस संगे ये सब सर किसी फीडबैक मु लिखे आनी सब ठीक अच्छी गोटे गोटे अर्थ करुँच जे तुम जो स्पेसिफिक प्रश्न जो पचार तुम उत्तर देव एक्सप्लेन कर चेष्टा जब तुमको बोर्ड पचारा मेम्बर पचारे एक्सप्लेन करो मैडम तुमको पचारे सिचुएसन तुम जिनसा कौन कहीदेल suppose the you are in a house, this temperature is this, that will go outside temperature. It's explanation of the time. She only coming out there, please explain. Then you go on explaining. Otherwise, when they ask the basic data, give the basic data and we will try. If they say that kindly explain, then we will explain. What will be, apart from giving the perfect answer, that is the fact which is supposed to be rudimentary fact is omitted. After that, we are going to analyze it. Presuming that the person who is asking the question is not understanding properly. Yes, sir. Must say that. No, we are not supposed to do it. Yes, yes. And after that, you want to taking body language there, that rhythm you are keeping while speaking, give a pause. That's required. Becoming a little lyrical.
मैम टिके पॉज नहीं कि कहबी मैम इटा माने गोटे स्पेसिफिक आंसर और टिके पॉज नहीं कि रिदमिकल न हो कि You कहबी don't need to explain all this. स्पेसिफाई हाँ What is the trait? You tell me the trait. You are explaining the qualities of that trait. सॉरी सर एक्सटर्नल फीडबैक सर फीडबैक किसी माने अलग फोकस एरिया माने कौन आउ ଡେଭଲପ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଟିକେ କହିବ ଯେ सब्जेक्ट आइडिया କମନ କଥା ପଚାରିବେ ଯେ ଯୋଉ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ସପୋଜ ଟୁ ଟ୍ରେନିଂ ଯିବ ନା ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଯୋଉ ଭାଇବାରେ ଟିକେ ପଚାରିବେ ଟ୍ରେନିଂ ପୂର୍ବ ଭାଇରେ ଏଇ କଥା ପଚାରି ଜଣା କ'ଣ ମୋତେ କ'ଣ पढ़ी भी आउट सर ଆଚ୍ଛା डेफिनेशन दे दी कितना बड़ो ଏଇ କବି ବାଉଁଶ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ବୋଲି सर ବାଉଁଶ ଗଛ ବାଉଁଶ बाउंस हाँ सर ନହେଲେ ଘାସ ଆମେ ଇଂଲିଶ ହେଉଛି ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ଧରା ଦିଏ ଦେଶୀ ଦେଶ ଫରେଷ୍ଟ डेसिडुअस हाँ सर ଦେଶୀ କ'ଣ ପତ୍ର ଧରା सर पत्र झड़ा देते ବାଉଁଶ ପତ୍ର ଧରା ଧରି କହିଦିଏ ପତ୍ର ଧରା ଖାଇକି ଦିଏ सर कहाँ की रानी ने रीजन ଗୋଟେ ପତ୍ର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ପତ୍ର ଧରା ଦିଏ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଜନ ବିଛ ତ हाँ ପତ୍ର सर ଧରା ଦିଏ ना ଖାଇକି सर ପତ୍ର କାମ କ'ଣ सर फोटोसिंथेसिस ପତ୍ର କ'ଣ ହୁଏ सर फूड जनरेट है कि କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନେବ हाँ अच्छा ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଛାଡ଼ିବ ହଁ। ପ୍ଲସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ବି କରେ ପତ୍ରଟା हाँ ଫୁଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି हाँ ତ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ପାଣି ଦରକାର ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶୀ ପରିସର ଜଙ୍ଗଲ ଡ୍ରାଇ ଏରିଆ ଅଛି ତ ପାଣି କେଉଁଠୁ ପାଇବ ଖରା ଦିନେ अच्छा ତେଣୁ ଲିଟରେସ୍ ପତ୍ର ବଢ଼େଇ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେବ ପତ୍ର ନ ରହିଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେବନି ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ପାଣି ସବୁ ପ୍ରବଳ ଥାଏ ତେଣୁ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ଜଙ୍ଗଲର ପତ୍ର ଲାଇଫ୍ ତେଲ ମାସେ ଦେଶୀ ଫରେଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ଗଛର ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି 9 ମାସ 8 ମାସ ତେଣୁ ଏମାନେ 4 ମାସରେ ଲିଟରେସ୍ ହେଇଥିବେନି ଯେହେତୁ ମିନିମାଇଜ୍ मिनिमाइज ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଲା ସେମାନେ ପାଣି କୋଉଠି ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏଠୁ ଦେଶୀ ଫରେଷ୍ଟ କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ଯେ ଦେଶୀ ଫରେଷ୍ଟ ଫୁଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ତାର ହେଉଛି 80% ଆଉ ଗୋଟେ ବାୟୋଟିକ୍ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଆଉ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ନଷ୍ଟ ଯାଇପାରେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ଜାଣିଛ ତ क्लाइमैक्स हाँ सर ତାର लास्ट ହେଉଛି ବାୟୋଟିକ୍ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ନଟ୍ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ କୋଉଟା ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁରା ମାନେ ଅବେଗୁନି ହେବ ଅମରି ହେବ ଏମିତି କାମ ହେବ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଶିଳାରେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କ'ଣ ଖାଇପାରିବ ଆଉ ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଗୋଟେ ସାରଟାକୁ ତାକୁ ଜଳେଇବ ପଡ଼ିବ ଯାହାଫଳରେ ବାୟୋଟିକ୍ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ ତା ବାୟୋଟିକ୍ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ସାର ରହିବ ଗୋଟେ ସାର ଜମା ଯାଇକି ଆଳୁ ଜମା ଆସିବ ତ ଦୁଇ ତିନି ମାସକୁ ସଂଶୋଧନ ଆସିବ थैंक यू